So, we are live now. There is no magic, no hidden tracks, and no secret handshakes that can bring you immediate success. But with time, energy, and determination, you can get there. A very good evening and namaskar. I'm Devanshi Sharma, your host, and on the behalf of the entire team of Jabalpur Incubation Center and Jabalpur Smart City, I welcome you all to this very special, very ambitious Legal Pathshala 2022, aiming to reduce the failure rate of startup because of lack of awareness and knowledge of legal and compliances. थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग आवर टुडेज सेशन। एक बहुत ही अच्छा डिटर्मिनेशन दिख रहा है हमारे व्यूअर्स में जो पिछले 7 दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज डे 8 में हमारे साथ जुड़ी हैं मिस रिधिमा दीक्षित, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी भोपाल। वेलकम रिधिमा मैम। Thank you. She'll cover the topic and explain the whole hierarchy and the procedure of contract management, founders agreement, consulting agreement, shareholder, NDAs, letter of intent, and other documents that every Indian startup should know. सो एंड और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि वील कंडक्ट अ क्वेश्चन आंसर राउंड। हमारे लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं हम अपने सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस लेंगे, जिसका आंसर रिधिमा मैम करेंगी। सो कीप वॉचिंग द सेशन, होल सेशन। साथ ही हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें हम सेशन के बाद एक क्विज की लिंक शेयर करेंगे, तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो सभी जाके उसे प्लीज़ देखें और जो क्विज है उसे फिल करें। For today's session, I have Mr. Akash Dubey, my co-host. Hi, Akash. Hi, ma'am. Hello. Okay. So, Ridhima ma'am, you can please go ahead. Stage is over to you. Thank you so much, ma'am. Am I clearly audible to all of you? Yes, perfectly audible. Okay, so before beginning of the session, first thing that I would say is I would give my sincere thanks to the organization for inviting me for the lecture. It's a very good platform that you've worked with, and in one way or the other, it will lead to more and more startups in India, which is very much need of the hour. We need more and more easygoing ease of business as such, as why this particular lecture is made also, right? So without going into any very specific status, I'll just start with general understanding. I think most of the viewers जो हम हमें आज देख रहे हैं, हम बिजनेस किसी भी तरीके का अगर शुरू करते हैं तो पहली चीज जो होती है कि हम अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, हम उसी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। अगर मैं आज यहाँ सोचूं कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मुझे एक कोचिंग सेंटर डालना है या मुझे कोई खुद की फर्म शुरू करनी है जिसमें कि मैं मेंबर्स रखूंगी, या मैं ये कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं एक प्रॉपर बिजनेस शुरू करूँ कॉस्मेटिक्स का या लेट्स से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, विच एवर दैट माइट बी। तो पहली चीज जब हम किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं तो क्या चीज से शुरू की जाए? पहली चीज तो देयर आर मेनी वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. सम पीपल स्टार्ट द रीजंस ऑफ startup are very ambitious in nature, wherein they are mostly going towards profitable organizations. On the other hand, in certain cases it is more of a creative way of स्टार्टअप, जो कि नाउ यू सी अ लॉट ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग कि लोग अपनी तरफ से चीजें बनाते हैं एंड जो DIY होते हैं कि दे टीच यू और दे स्टार्ट मेकिंग थिंग्स फॉर द पीपल इन जनरल, एंड फॉर देम इट इज मोर ऑफ अ क्रिएटिव वे ऑफ स्टार्टिंग अप द बिजनेस. रीजन किसी भी तरीके का हो, व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस यू रिक्वायर सर्टेन थिंग्स कि हम क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस टू फ्लरिश. So before going to as in whether it is a profitable organization या फिर वो सिर्फ for the purpose of your own creative venture with the others, whichever way it might be, we primarily focus on how or what we want to achieve with the business.
नाउ बिजनेस किसी भी चीज का अगर हम शुरू कर रहे हैं, तो लेट्स टेक द एग्जांपल, हम कंपनी फॉर्मेशन की बात करें, बिकॉज इट इज मोस्टली रिलेटेड टू कंपनी रिलेटेड मैटर्स. Now, in that regard, why do you want a business to be established, and how you're going to move ahead with it? Now, I think most of the people have seen Shark Tank by now. How lethal it has been. It has gone now to for the purpose of creating a business, or for the purpose of engaging money from another person, right? So I'll start my general discussion as to why would you start a company instead of, let's say, a partnership. पार्टनरशिप इज मोर डिफरेंट. जनरल पार्टनरशिप की हम जब बात करते हैं, जो पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू प्रोग्रेस करते हैं, दैट वी हैव, यू माइट हैव यू योरसेल्फ, अ फ्रेंड ऑफ योर्स, और 2-3 फ्रेंड्स ऑफ योर्स हु वुड वन डे हैंगिंग आउट टुगेदर वाइट थिंक कि हमें ना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, एंड वील थिंक कि this is the thing which is very much needed in the hour. Let's say music, abhi pandemic ke time pe you have headphones, music industry has boomed because people were sitting at home. OTP platforms also boomed, that you would provide certain services. Then DIY jo hote hain, do it by yourself, videos jo rehte hain, wo bahut zyada boom aa gaya hai. So you can start a YouTube channel, right? Now, for that purpose also, you need to have an understanding between the people who are investing their time and money, right? So why partnership and not anything else? There are various way जहाँ पे हम joint लोगों का recognition करते हैं. They are creating another legal personality as such. There's one way of the general partnership, which is regulated by the Partnership Act. The Partnership Act also provides, एक लिमिटेशन आ जाता है, जनरल बताती हूँ मैं, कि वो एजेंसी जैसा काम करता है, कि हर जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर का एजेंट है. एट द सेम टाइम देयर इज सेवरल लायबिलिटी एंड जॉइंट लायबिलिटी, दैट कि अगर लॉसेस होते हैं तो सबको लॉसेस होंगे, और अगर प्रॉफिट होता है तो सबको प्रॉफिट होगा. एट द सेम टाइम, इफ सपोजिटली वन ऑफ द member, let's say, leaves the firm, knowingly, unknowingly, because of his insolvency or other ways, whichever that might be, that will also affect the company. And since they are jointly and severally liable for company, so not the company, the partnership, उन सब के ऊपर equally burden create होगा. तो when you refer as such कि business का startup करना है, तो we need to protect ourselves first thing. If it's a art thing or anything else, first thing that you require is कि हम क्यों बना रहे हैं, हमारा reason settle हो गया कि it's either for my own purpose, for personal purpose, or whether it is for other people for profit purpose. Once that is done, why would you choose company, right? So we see in general limited partnerships are also there, wherein which there is a capital restraint, कि इतना कैपिटल होना ही चाहिए, तभी आप एक LLP, that is a limited liability partnership, that can be established. That is 2005's act which has established it. General partnership has its own perks and pros and cons, I would say. कुछ चीजों के लिए it has more कि आपका एक limited circle है, वही लोग फर्म चला रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सब लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब भी किसी तरीके का बर्डन आता है फर्म के ऊपर. Thus you go into a different way कि नहीं, I have to protect my interest. If I'm spending this much amount of money, spending this much amount of time, I should also get something in return of it, right? So जब हम ये चीज को रख के आगे बढ़ेंगे, तो we need some other way of doing business, or for the purpose of ease of business, right? So then you have the next way, आप एक trust establish कर सकते हैं, wherein you put up an object कि ये particular object है, इसके basis पे I want to earn money, or I would give my finances in this regard. And after and I'll appoint a person who is trustee, and the beneficiary could be me and people who are part of the family or otherwise, right? But that again has certain limitations, as in कि उसके business conduct में trustee becomes the more important person than the beneficiary as such, क्योंकि उसके पास में ज़्यादा powers दे दिए जाते हैं, not specifically but in most of the cases. Now thus comes the concept of another way of business, that is sole proprietorship, that you would say that I will bear everything, time, money, whichever is required, I'll share everything and I'll get everything back. मुझे सारी चीज मेरी है, अकेला बिजनेस चला रहा हूँ मैं सारी चीजें खुद ही इन्वेस्ट करूंगा, और रिजल्टेंट भी मेरे पास ही आएगा.
which normally I think a lot of startup businesses or very small businesses do, कि वो खुद sole proprietorship रखते हैं, तो फिर then in that case they bear the loss as well, right? But seeing all of these ways of doing business, इतने सारे तरीके हो सकते हैं business के, sole proprietorship, general partnership, LLP, that is limited liability partnership, or trust as such. Then why company? Company का importance क्या आता है? Now, company here becomes important is because it has three very specific things. One is perpetual succession. Separate body. Separate body is कि you yourself are investing certain thing, but the corporate that is born is not you. वो एक अलग entity है आपसे. नाउ सपोजिटली मैं एग्जांपल देती हूँ कि आज अगर मैं आकाश सर और देवांशी मैम साथ में एक बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो अगर हम पार्टनरशिप करेंगे तो हम सब लोग लिमिटेडली लायबल होंगे. सपोजिटली यूट्यूब चैनल जैसे ही कर रहे हैं हम लोग, तो अगर प्रॉफिट होगा तो हम तीनों में बटेगा, लॉस होगा तो हम तीनों में बटेगा. लेकिन अगर हम एक कॉर्पोरेट बॉडी बना देंगे जो कि हम लोगों के साथ में मिल के, लेट्स से यूट्यूब चैनल नेम समथिंग, and or a corporate as such which will own the YouTube channel, what happens is कि I create a body which is different from what I am. मैं अकेली नहीं हूँ उसमें, एक totally अलग body है जिसका मैं एक member हूँ, right? क्योंकि वो body अलग है, तो जो लोग उसके members हैं उनसे अलग होती है, इसलिए has a perpetual succession. That means perpetual मतलब हमेशा के लिए, वो एक ही दिन के लिए नहीं बनी है, या हम तीनों में से किसी एक के छोड़ के चले जाने से उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो परपेचुअली एग्जिस्ट करेगी. मेरे अलावा कोई दूसरा मेंबर आ जाएगा, बोर्ड ऑफ मेंबर्स आ सकते हैं नए, या नए प्रमोटर्स जो कि हम हैं, या द वंस हु हैव स्टार्टेड द थिंग, एनीथिंग or anyone can be added to this particular body, right? So what it does is it creates a different way altogether, right? I'm really sorry. Ma'am, you are clearly audible. All right. Okay. I thought I missed the screen actually. No, no, no. So when we, thus क्योंकि एक सेपरेट बॉडी है तो उसका एक परपेचुअल सक्सेशन है कि वो एक के बाद एक नए मेंबर्स आते जाएंगे, पुराने मेंबर्स हटेंगे, मेंबर्स बढ़ाए जा सकते हैं, कैपिटल बढ़ाया जा सकता है, जो कि पार्टनरशिप्स में बहुत लिमिटेड रहता है कि इतने के साथ ही आप लिमिटेड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. दस हमारे पास क्या हो रहा है, नया रेवेन्यू है, हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट हर साल, सपोजिटली आज हमने बिजनेस शुरू किया है तो हमारे पास आज सिर्फ 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, अगले 2 साल में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आने लगेगा. तो हमारे पास एक वे है कि हम नया लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, नए शेयर्स इशू कर सकते हैं. तो दस इट गिव्स यू परपेचुअल सक्सेशन कि मैं हूं या नहीं हूं, बट द वन दैट वी गो इन द मूवीज ना, इफ आई एम हियर और नॉट, बट द स्टेज शो मस्ट गो ऑन, राइट? सो इट डज दैट कि एक परपेचुअल सक्सेशन किया जा सकता है. नेक्स्ट इज कि यहाँ पे सारी चीजें लिमिटेड ओनर्स के ऊपर, या द वन जो प्रोप्राइटरशिप में होता है कि वही सारे मैनेजमेंट नहीं देख रहे हैं. You will have skilled force whom you can employ for doing the same thing. Supposedly, as the same example that we are done, that we are starting a YouTube channel for education of these general people. What I can do is, as ma'am has done, I have started the channel, but I will employ someone else to take the lectures. Right? So similarly, to manage that, कि किसी technical assistance की जरूरत है या किसी specific area में cover करना है, thus you would have skilled people who would work for you, जो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं, बट अगेन इन कंपनी द होल कंपनी वुड देयर आफ्टर बेयर द कॉस्ट. सपोजिटली आप किसी कंपनी को शुरू भी करते हैं तो यू स्टार्ट विथ गोइंग थ्रू फाइनेंसेस, यू वुड रिक्वायर अ सीए, यू वुड रिक्वायर सीएस, यू वुड आल्सो रिक्वायर अ एडवोकेट जो भी आपको गाइड कर सके, राइट? तो आप एक फर्म को एम्प्लॉय कर सकते हैं. So these are skilled people whom you can use for the purpose of creating a company. So thus when I say as such, why company gives you this kind of power, right? It creates a different person altogether, and it creates also a way of managing the affairs more appropriately than just creating a one thing. Now when we say nexus here, what I tend to
discuss here, as in ki once you have created this I would say a mammoth of a thing that is a company, which can be either act by itself or will act by its agent, either ways. It does what? It creates a nexus of contract. It becomes that ki any person, for anything that you want to do, you have created a legal person. एक company legal person होता है जिसको recognition देता है law. तो अब वो अपना काम मैनेज करने के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स लगेंगे उतने कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स करेगा. एज आई स्टेटेड कि अगर सीए की जरूरत है तो हम सीए को भी एम्प्लॉय करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट में रख सकते हैं. हम चाहेंगे तो वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कंसल्टेशन एग्रीमेंट्स. Consultation agreements is when you hire someone else for the purpose of very specific thing for the purpose of consultation. So you can have a consultation agreement किया मैंने किसी let's say एक firm से, law firm से, वो throughout formation of the company till the end of the company, all of these cases, this particular law firm will guide me through it कि मेरी liability किसी तरीके से बची रह सकती है. Now जब हम law firm की बात कर रहे हैं तो क्योंकि हमने एक चीज समझी कि एक corporate body अलग है और एक मैं एज अ मेंबर अलग हूँ, तो मैं अपने लिए भी किसी को एम्प्लॉय कर सकती हूँ, बट कॉर्पोरेट इटसेल्फ वुड एम्प्लॉय समवन फॉर इट्स बेनिफिट. जैसे इफ यू सी डायरेक्टर्स हु आर एम्प्लॉयड हु मैनेज द कंपनी, ये डायरेक्टर्स किसी एक इंडिविजुअल के या शेयर होल्डर के नहीं होते हैं. वो डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर, दे वर्क फॉर द कंपनी, राइट, द कॉर्पोरेट. तो वो हर बार का कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, right? So thus we see that it becomes nexus of various contracts, whether consultation, I can have employment contracts, I can have any way of acquiring land, dissolving, giving away the land, sale, purchase, mortgage, whichever that might be required for the purpose of completion of this particular company. Now ये company भी अलग अलग तरीके की होती हैं. Public companies, I think you are aware of, mostly are owned by the government or has certain part of the company which is at least 51% shares are owned by the government. And then you have private companies which are made for the individuals as such. Now these corporate bodies are either limited or limited, as in the liability on the members. जो बना रहे हैं उसको limited liability रखना चाहते हैं कि इतने ही liability हमारे पास आएगी, as I said ना, जो partnership में नहीं होता है. Here you can do is कि हम limit कर सकते हैं कितना amount I have invested, I can limit myself कि okay मैं सिर्फ इतने ही amount के लिए liable हूँ, उसके ऊपर नहीं जाएगा. Next is unlimited. Normally it's not very common now. Previously it was unlimited company wherein you have invested everything and you have not limited it by any way कि मेरा जितना भी amount गया है, investment गया है company में, I have not limited it to any particular number. That limited can also be further classified as limited by share and limited by guarantee. Now both of these are the way wherein you can either say that the amount that you have invested by the way of share can be limiting, and guarantee as in how much amount of money you, if and when the either company requires, you would limit yourself by that particular guarantee. Those are again specifically given amounts. Right. So what it does is these sort of company, there are other companies under the act which are non-profit in nature. Section 8 primarily provides 2013 mein aaya hai, which provides for non-profit companies. Then there are small companies wherein there is a limited amount of capital and a limited amount of people who are joining it. So when you refer to as the lexus of contract, the company becomes a corporate body itself, acting through its agent, and goes into any or whichever form of contract that might be required for it to function. So as such, when I mean nexus, I mean कि कितने सारे contracts company बनाता है, because it connects a lot of things, right? Not one or more. There it becomes a let's say a focal point, or या बोलते हैं ना center point कि हर चीज उधर आके connect हो रहा है. Now moving on to the basic understanding of the lecture, I have divided, मैंने divide किए हैं 3 तरीके के contracts जो कि are given in the session's description also. Pre-incorporation contracts or agreements, incorporation agreements or contracts, and post incorporation contracts. Now pre-incorporation contract मतलब कि जब कंपनी बनी नहीं है उससे पहले कुछ contracts जो कि enter किए जा सकते हैं,
सेकेंड इज इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट. इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स या अग्रीमेंट्स है जिसके थ्रू कंपनी बनती है. एंड थर्ड इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, एज इन जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज में कॉर्पोरेशन के बाद ड्राफ्ट किए जाएंगे. नाउ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी बिग एम्बिट व्हेन यू से पोस्ट, क्योंकि पोस्ट में तो यू कैन गो टू परचेज, सेल, एक्विजिशन, मर्जर, ऑल ऑफ दिस वुड बी इंक्लूडेड इन दैट. आई हैव लिमिटेड माई सेल्फ टू शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट देयर. Reason being that it becomes more, it becomes very wide, and with 1 hour's description it won't be, I won't be justifying that thing, right? So सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं. For the you can change the slide with pre-incorporation contract. Now, as you see the hierarchy here, the company law becomes the primary whenever the drafting. कभी भी हम जब contract draft करते हैं, agreement draft कर रहे हैं, तो you start with company law जो कि central point पे है. Company law as such, the Companies Act 2013 and other SEBI and other regulations, security laws जिन्हें बोला जाता है, Security Act, also would thereafter become at the highest in the hierarchy, which will provide you ki how the particular contract or particular agreement is to be drafted, and it becomes fulcrum ki हम किस तरीके से progress करेंगे company में, वो describe करेगा. Second is MOA, which is again a incorporation document. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मतलब जिससे कि हम कंपनी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं. AOA, which is again the third important document there, जिसके थ्रू कंपनी का एग्जिस्टेंस में किस तरीके से फंक्शनिंग होगी उसके बारे में बताया गया है. एंड द लास्ट, द वन दैट आई वुड डिस्कस विल बी शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट. शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट अगेन इज जहाँ पे कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाने के बाद शेयर होल्डर्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपस में एग्रीमेंट्स कर सकते हैं. So I'll move to the next slide. I'll start with the founders or promoters as such, who are the people who have incorporated the company. Now, pre-incorporation agreement refers to anything which is made before the corporation or company has come into existence or at the promotional stage. जब बिल्कुल शुरुआत में कंपनी को शुरू करना है, जैसे मैंने बात किया ना कि अभी हम लोगों ने सिर्फ डिसाइड किया है कि we'll start a YouTube channel which will be for the purpose of whichever reason that we have done it for, जिस भी रीजन के लिए हमने बनाया. तो जब हमने एक तरीके से वो डिसाइड कर लिया है कि किस चीज के लिए बनेगा, तो now we will start working कि अब हमें इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी. Thus, promotional stage में the first thing that is the founders agreement. Now these agreement are prepared, normally ये prepare किए जाते हैं on the behalf of the company, even though company नहीं बनी है, लेकिन हम agreement करेंगे so that कि हम company start कर सकें. Now अगर आप किसी manufacturing company या manufacturing के लिए जा रहे हैं, तो you would go कि you would require कि land हो जहाँ पे you will construct something जहाँ and then you will begin manufacturing. Now to get the land as such, you have still अभी तक आपको अगर land चाहिए और आपके पास में अभी company existence में नहीं है, तो आप permissions या lease करने के लिए क्या करेंगे? You start with the founders agreement. The founders agreements are those wherein, since company itself is not brought, the promoters or the founders will enter into the agreement. Now अगर मुझे जैसे बात हुई मेरी अभी कि मुझे एक YouTube चैनल शुरू करना है, तो मुझे कहीं रजिस्ट्रेशन लगेगा या नहीं लगेगा, या लॉ क्या है साइबर स्पेस की उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, या किस तरीके की रजिस्ट्रेशंस लगेंगे, एनी डॉक्यूमेंट विच आई हैव टू फर्निश फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, आई रिक्वायर कि एक लॉयर होना चाहिए मेरे साथ में. तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी कि हम तीनों ने मिलके एक फर्म हायर करिए बाय द वे ऑफ कि अभी हमारे पास कंपनी नहीं है, हम फाउंडर्स हैं कंपनी के, तो हम साथ में एंटर करके एक एग्रीमेंट करेंगे कि दिस पर्टिकुलर अटर्नी विल देयर आफ्टर वर्क फॉर अस. नाउ उसके बाद व्हाट विल डू इज वी माइट रिक्वायर CS और अ CA फॉर द इन्वेस्टमेंट अंडरस्टैंडिंग कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा. नाउ कीपिंग दैट इन माइंड, व्हाट विल डू इज कि वील एम्प्लॉय समवन एल्स. Now all of this employment or all of these document as such agreements are drafted for the purpose of the company by the founders of the company or the people who are promoting the company as such. Now Companies Act 2013 section 2 clause 69 provides who are promoters. So promoters normally are the ones जो कि
prospectus में, prospectus as in the first document that is created कि form कब बनेगा company, राइट तो उस प्रोस्पेक्टस में आइडेंटिफाइड है कि ये लोग हैं. नाउ लेट्स आई गिव एन एग्जांपल. इफ सपोजिटली हम तीनों का नाम प्रोस्पेक्टस में होगा तो यू माइट नॉट इवन इन्वेस्ट इन द कंपनी, बट इफ लेट्स से आई हैव अ बिग नेम एसोसिएटेड विद इट, टाटा और जियो एज सच, तो यू वुड ट्राई एंड थिंक नहीं नहीं इसका फ्यूचर दिख रहा है, राइट. सो दीज आर द वंस हु आर आइदर प्रमोटर्स और द founders of the company, and these are named normally in the prospectus, and they can or I directly or indirectly be the shareholders or directors of the company later because वो share provide कर रहे हैं. Now in India the concept is very different compared to the US में what happens is कि जो promoters रहते हैं, once the company is incorporated they leave, they invest till the company is made, जो कि यूएस इट इज वेरी कॉमन देयर, बट इन इंडिया नॉर्मली जो प्रमोटर्स होते हैं वही आगे जाके शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स बन जाते हैं या डायरेक्टर्स भी बन जाते हैं बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड दिस मच इन द कंपनी, राइट. सो दस वी से व्हेन यू से incubation centers and everything, what they do is they would only provide you with platform, but they would leave, they would promote the business and then they would leave after that. Now coming as to क्या इफेक्ट होता है promoters या founders agreement का. So they normally are the ones which are generally are not binding on the company as the company itself is not incorporated. General understanding है कि जब company है ही नहीं तो उन contracts से या उन agreements से company bound क्यों होगी. Now to this the legal position as such has been interpreted under different acts. First is कि वो bound नहीं होंगे, जिन्होंने contract किया है वही bound होंगे. That is now the promoters would take the responsibility, bind themselves personally for the amount that they have taken. इसमें साथ में investment भी हो सकता है कि आपको एक particular property के लिए जरूरत पड़ रही है तो आपने investment भी gain किया है by the way of promoters और फाउंडर्स एग्रीमेंट की हम आपसे कैपिटल लेंगे एंड जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तब हम उसमें से शेयर्स प्रोवाइड कर देंगे, राइट. दैट कैन आल्सो बी डन. नाउ दे आर बाइंडिंग ऑन द प्रमोटर्स टिल द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड. वंस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एज सच इट कैन बी चोजन कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपनी या कॉर्पोरेशन नाउ वुड वर्क अहेड, दस उनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अडॉप्ट कर लिया जाता है. This is another way of dealing with the promotion or founders agreement. And the third is which is the interpretation given by specific relief act. Now specific relief act क्या बोलता है कि अगर purpose of the contract which is done by the promoters or founders, if it is done for the purpose of getting the value or for the purpose of establishing the company, then it becomes binding to the company. कि आप आज कैपिटल लेके प्रमोटर्स एग्जिट कर दिए हैं या फाउंडर्स एग्जिट कर दिए हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी इज नॉट बाउंड टू पे एनी अमाउंट टू यू, right. So thus it creates a very lawfully accepted thing that once you have joined in a particular venture you can thereafter get the benefit of it as well, right. So I think this was the brief that I wanted to give regarding the founders agreement. Now these founders agreement can be of any nature, as I said, it could be for acquisition of land, for lease, for employment. There can be service agreements as well. Service agreements are different from employment. Employment normally ये होते हैं जहाँ पे हम कंपनी में आप permanently रख लिया जाता है. Service agreement किसी particular purpose के लिए होते हैं. Then as such if you would go to consultation agreements, I can either employ a person with caliber जिसको मैं let's say किसी भी तरीके के वैल्यू के लिए either law या financial assistance के लिए बात कर सकती हूँ या फिर मैं consult कर सकती हूँ for a limited period of time. Now with consultation agreement it is required कि time limit और purpose described हो agreement में. Now moving to the next point, that is the incorporation documents. Now, incorporation documents are the one which becomes very important, I think, for every person who is beginning with a startup as such. Now, these are the documents or agreements which are essential for the formation of the company, right? So, this now another thing that I'm really sorry I forgot to mention कि जब promoters या
फाउंडर्स किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक तरीके से एजेंट जैसा काम करते हैं कंपनी के लिए. Thus, in many cases, they might be required by the law to be part of it, right? Moving on to the memorandum of association becomes as in the first way of establishing the company as such. Now, memorandum of association of a company is the fundamental document. It constitutes, it's the constitution as such. अगर law के students हैं तो उन्हें समझ में आएगा कि जिसके बेसिस पे, जैसे इंडिया में हम कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक लॉ मानते हैं कि जिसके कारण कंपनी बनी है या उसमें किस तरीके से काम होगा वो हम डिसाइड करते हैं. मैम यू कैन चेंज द स्लाइड. The memorandum of association becomes the charter of the company. It contains every information regarding the incorporation, and it also defines and confines the area of the operation of the company, wherein how किस तरीके से कंपनी काम करेगी, किस एरिया में करेगी, वेदर वो प्रॉफिट लेगी या वो नॉन प्रॉफिट एंटिटी बनेगी, किस लिमिटेड लायबिलिटी रखेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी रखेगा. यू प्राइमरली एस्टैब्लिश दैट. In addition to this, you also establish that ki the company would thereafter work in which direction. Now, section 4 of the Companies Act जो है वो बताता है कि किस तरीके के what is a MOA, and table A, B, C, D, E जो कि 2013 एक्ट के साथ में दिए हुए हैं, वो बताते हैं किस तरीके का कंटेंट होगा किस तरीके की कंपनी के लिए, लिमिटेड बाय शेयर or limited by capital, limited by guarantee, whichever type of company that might be, limited company अगर आप बना रहे हैं, right? So you can go through the act and you can see in the tables which are given in schedule 1 of the act to know what these are. Now there are कुछ clauses हैं जो कि इन documents के लिए very specifically जरूरी होते हैं, especially the memorandum of association. That is the first one being the name of the company. अगर कोई public limited company है, the limited term should be mentioned. If it is a private limited company, then private limited should be mentioned जब भी आप किसी भी तरीके का company बनाते हो. Now this again requires that it should not be resembling to other companies. दूसरी company के जैसा नहीं होना चाहिए. Already existent companies जिनके नाम registered हैं with the company under the Companies Act, उनके साथ में नहीं होना चाहिए. Again, we have IP laws also for that कि trade name या trade secrets जो होते हैं उनको protect किया जाता है. तो similarly आप भी same नाम रख के limited liability company नहीं बनाओगे, आप नया नाम रखोगे. Obviously innovative है, startup है, you have to keep it like that. And next is the use of the company. It will also provide that what is the nature or why that particular company is to be made. Next, the second clause which is very important is the registered office clause. Now one thing जो अभी नया 2013 के amendment के साथ आया है कि अगर कोई corporation body या company बन रही है तो उसमें required है कि उनका एक registered office इंडिया में हो. Even certain foreign companies which previously did not have registered office in India now have registered office in India, right? So this requires them to have any particular registered office within the territory of India. Next is the object clause. Object clause of the memorandum of association provides that what is the object or the purpose for which the company is made. Now there can be main object. Supposedly main object would be कि मुझे let's say educational platform introduce करना है for students. In pursuance to that particular main object, there can be other sub incidental कि मैं YouTube channel open कर रही हूँ, कि मैं एक not as such YouTube, I can have a limited amount that could be given by the students. तो मैं एक private ऑनलाइन फॉर्मेट यूज करके देयर आर मेनी साइट्स जो कि प्रोवाइड करते हैं कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर सकते हैं, आप इंटरैक्टिव सेशन ले सकते हैं, वेदर इट इज गूगल और वेबएक्स, व्हिचएवर दैट माइट बी. सो फॉर दैट आई वुड हैव मेन ऑब्जेक्ट इन परसुएंस फॉर व्हिच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, एंड उसके बाद हमारे जो भी इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. Now act primarily provides जो
कंपनीज एक्ट है वो ये बताता है कि एनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर उसमें कोई मेन ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया गया है या इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स जो कि मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए रखे गए हैं, इन दैट केस एनी कोई भी चीज अगर इन ऑब्जेक्ट्स के बाहर किया जाता है, दैट विल बी अल्ट्रा वायरस. अल्ट्रा वायरस एज इन जो कंपनी का इंटेंट था आप वो नहीं कर रहे हैं, राइट. इफ यू आर अ नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी यू आर क्रिएटिंग प्रॉफिट, दैट डजंट मीन कि आप प्रॉफिट नहीं रख सकते हैं, बट प्रॉफिट आप सिर्फ मेंबर्स को ही नहीं देंगे, राइट. Now, as to there is no restriction, अगर ये चीज करना है, it's not like that you cannot do as such. You can amend the memorandum later, but primarily it focuses कि you have once registered your company as with a particular object, why change? Normally, if it is done, also it is changed with a high with the voting of the shareholders later. Now, each particular thing is to be authorized, and the object as such will also provide to the people the way of or how the business is to be conducted of the company. Next is the liability of the partner. जो हमने next important clause. This liability of the company partner would provide that how would a limited company be there if it is unlimited. You just described that, but if it is limited, in that case you would require whether it is limited by share, wherein the liability of the members is limited to the amount unpaid if the shares held to the shares which are held by them, or in the case of limited by guarantee, the amount up to which each member undertakes. They can undertake whichever amount that is there, wherein in the share whichever they have the amount they have already paid, right. This would also include अगर expenses और charges हैं जो कि again promoters के साथ भी होता है कि they would also provide कि कितना contribute किया है, कितना अलग से है. Next is the capital clause. This clause of memorandum of association of a company includes कि company किस तरीके का share capital इकट्ठा करेगा, the amount of share capital with which the company is registered, एंड द डिविजन कि कितना फिक्स्ड शेयर्स हैं, कितने नंबर, कितने सब्सक्राइबर्स हैं. नॉर्मली जो जब डॉक्यूमेंट होता है उसमें सबसे आखिरी में एक टेबल बनाया जाता है, कितने लोग उसमें प्रमोटर्स के तौर पे आ रहे हैं, कितने लोग वहां पे किस अमाउंट को कितना अमाउंट प्रोवाइड करें जो सब्सक्राइबर्स रहते हैं मेमोरेंडम के. दीज आर द वंस हु वुड देयर आफ्टर ओन द कंपनी लेटर, राइट. So and that shall not be less than one for the purpose of company, as we can understand, right. And number of shares each subscriber intended to take would also be mentioned. तो एक cap पूरी तरीके से बना दिया जाता है at the end of that thing. Next is the name of the company subscribers, their name, their description, where they stay. All of this thing is added to the memorandum of association. Now moving on to the next document, that is article of association here. Now, article of association primarily focuses कि हम internal management कैसे करेंगे कंपनी का. Now, you have section 5 of the act जो बताता है कि article of association क्या होता है. You have tables given under the schedule 1 F, G, H and I, जो कि depending on which type of company it is, the article of association mentioned. Now, this particular provision contains कि what will be the way of working of the company. Now, this would include shareholders' rights, variation in shareholders' rights, call for share किस तरीके से होंगे, क्या restriction रखेंगे हम. Now, in case of public companies, there is no limitation in transferring of share, wherein private companies में आप limitation रख सकते हो तो वो AOA के अंदर आ जाएगा. Forfeiture of share कैसे होगा. Then you describe as to capitalization जब होगा तो हम profits कैसे share करेंगे. How the general body meeting would be called, how the general body meeting will be conducted, voting rights, preferential voting rights, all of these are mentioned. Then agar proxies allowed hai, proxies wherein the person can himself not be present for the board meeting, could employ someone else, किसी और को बुलाया भेजा जाएगा meeting के लिए. Next is board of directors, how the particular who would be appointed, qualification क्या होना चाहिए. Then you see the managerial staff other than the board of directors जिनकी employment की जरूरत है. The seal of the company, if there is requirement of any kind of dividend established for the people who are members. It also includes winding up of the company. In case of the event of company cannot function, what will happen later, right. Now, this particular clause, the AOA,
describes everything which is internal to the company. Now, the next two things that I have mentioned here are primarily relating to कि MOA or AOA are public documents, right? तो किसी भी कंपनी का public document या private या public document, that is MOA and AOA, is normally present on the site or the company's description, depending on whoever the person, the company is. Now, this particular document, once it is created, it's now understood कि every person would know about it. Any person, why this becomes important is कि ये सारे documents दूसरे व्यक्ति को एक तरीके से constructive notice देते हैं. Now, the constructive notice does what? कि any person जो कि बाहर से कंपनी के साथ आगे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसे उसके AOA के बारे में पता होगा, because वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, right? And once that particular public document is stated or discussed by any held by another person party, they have a notice कि किस तरीके से वोटिंग होता है, या किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट अगर इशू होगा तो उसके लिए साइनिंग अथॉरिटी कौन होंगे, who are the people who are agents of the company जिनको साइन करना है, right? This gives the protection to the company from anyone who try to default it, right? कि हमें नहीं पता था कि आपके परमिशन से इतनी सारी लगती है, नॉर्मली हम गवर्नमेंट बॉडीज के लिए बोलते हैं, बट वट एवर परमिशन इज रिक्वायर्ड, शेयर इशू हुए हैं तो शेयर का and how much amount of share would be. नेक्स्ट इज जब शेयर इशू हो रहे हैं तो किस तरीके से इशू होंगे, प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं तो कैसे इशू होंगे, बोनस अगर इशू हो रहा है किसी एम्प्लॉय को तो कैसे इशू होगा, right, depending on that. Next is the doctrine of indoor management. This is again protection to the outsider जो किसी कंपनी में साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो कि अगेन AOA और MOA से उसका नॉलेज होना चाहिए. लेकिन अगर किसी तरीके की प्रोसीजरल इरेगुलैरिटी होती है जिसमें कि सपोजिटली वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड हैव साइन्ड ऑन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, he wasn't there during the time when the contract was issued, someone else on his behalf signed, which shouldn't have happened, right? So this is again an indoor thing कि कंपनी में सामने द अदर पार्टी माइट नॉट बी अवेयर कि इसमें स्पेसिफिकली किसी एक ऑथराइज्ड एजेंट की जो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का साइन होना ही चाहिए था. तो दिस प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर, द इंडोर मैनेजमेंट, कि इंडोर मैनेजमेंट के बारे में मुझे नहीं पता था तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी स्टिल रहेगी. सिमिलरली कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो कि MOA और AOA को इंपॉर्टेंस देते हैं कि दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, यू शुड बी अवेयर व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ agreement, right? So this becomes the incorporation document. Next, I'll move to the other ones, which is shareholders agreement and letter of intent and NDAs. Ma'am, you can change the slide, please. Now, हमने पहला पढ़ा कि इनकॉर्पोरेशन से पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, देन वी सी कि इनकॉर्पोरेशन किस तरीके से होगा. मूविंग नाउ टू दी post incorporation agreements. Now these are the agreements जो कि the company now enters for its functioning. Now one of the important agreement here becomes the shareholders agreement. The shareholders agreement is in India has again gained a lot of popularity because businesses bloom करते हैं. People who are part of those businesses would try to protect their rights, जिन्होंने या तो invest किया है या for that matter require any kind of protection. Now if you would see that बहुत सारे situations होते हैं कि अगर कंपनी किसी फैमिली के साथ में ओन्ड है तो वो फैमिली अपने के जो मेंबर्स हैं वो शेयर होल्डर्स हैं तो वो आपस में एक दूसरे से एग्रीमेंट कर लेंगे. इन द केस ऑफ जॉइंट वेंचर्स जहाँ पे दो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी साथ में या तो एक नया कंपनी बना लेते हैं या फिर अग्री करते हैं कि हम साथ में काम करेंगे. तो जॉइंट वेंचर्स में भी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल कंपनीज, दोनों कंपनीज का अमाउंट, टाइम एंड अदर एनर्जी इज गिवन, तो वो एक दूसरे को बचाने के लिए, लायबिलिटी से रिस्ट्रिक्शन करने के लिए एंटर कर सकते हैं इस तरीके की कंपनी के लिए. नेक्स्ट इज जो इक्विटी शेयर होल्डर्स रहते हैं
also they can enter into an agreement amongst themselves. This is a shareholders agreement. These are different shareholders who are part of this particular incorporated company, और आपस में उन्होंने एक तरीके से एक अग्रीमेंट कर लिया है. तो नॉर्मली दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट इज अ प्रीएम्प्टिव राइट. नॉर्मली कि वो प्रीएम्प्टिव राइट कि अगर शेयर इशू हो रहे हैं तो वो किस तरीके से होंगे, for the protection of the company as such. It's not necessary कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो उस कंपनी का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो नॉर्मली अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटर करते हैं. This would require them to have a specific type of voting rights. Creating a different preferential voting rights can be created कि सारे शेयर होल्डर्स मिलके किसी कुछ लोगों को प्रेफरेंशियल दें जिनके पास शेयर्स ज्यादा हैं. देन यू हैव इक्विटी शेयर्स जिनके लिए इशूड हैं, उनको कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स दे दिए जाएं. एंड दिस इज बेसिकली अ mutual and not suffer. Not necessarily, but it normally is. Now what it does is it creates a personal obligation on the part of each shareholders, not only on the company, right? So it is not binding towards the company, but rather it is binding on the members who has entered into this agreement. Now since it's creating a preemptive right as such, and voting right जिस तरीके के superior voting rights is another concept. Now in India we see that superior voting rights are issued 1:10 as such कि अगर shareholders आपस में agree करते हैं तो जितने shares हैं उसमें वो कितने मतलब एक vote की जगह वो 10 votes cast कर सकते हैं, creating a superior voting right. On the other hand, when you see the US jurisdiction, वहाँ पे 1:100 चलता है. That they have more way of moving the anything towards a particular goal. So primarily when you see voting as such, it is required that जब भी कंपनी की किसी भी तरीके का मीटिंग हो रहा है, बोर्ड का मीटिंग हो रहा है या एनी पर्टिकुलर थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, दिस वुड लीड टू द कंपनी वर्किंग बेटर. Now there are various cases in this regard as to the validity of shareholders agreement. क्यों valid होता है? Since we see that this is more of an incorporating and already incorporated. आई गेस मैम का कुछ इंटरनेट का इशू हो गया है. शी इज जस्ट कनेक्टिंग बैक. Am I audible now? Am I audible now? Yes ma'am, you are. Yes. So normally when we refer to this particular thing, shareholders agreement mein company is not bound with the agreement, but rather shareholders individually bind themselves. Now this primarily refers to, as I had mentioned, I'll not discuss agency problems in greater detail. I will just mention that when it refers to companies protection, the board of directors are employed. जो हम इम्पोर्टेंट पार्ट है मेजोरिटी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का. रीजन इज कि मेजोरिटी शेयर होल्डर्स के साथ ऐसा नहीं है कि जो उनका मन करेगा वो करेंगे. वी आर नॉट मेजोरिटेरियन इन द sense of a company as such, right? So thus to prevent any kind of operation or mismanagement in the company, and company के objects से हम change ना करें, जो कि मैंने अभी बताया था MOA के लिए जरूरी है, राइट, कि फॉलो करना है उसे, तो इसलिए शेयर होल्डर्स आपस में एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं. नाउ व्हेन इट रिफर्स टू माइनॉरिटी और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि किसी तरीके का डिसीजन, ऐसे एक डिसीजन पे आते हैं कि they don't want to go ahead with a particular type of object of the company and have to shift it to somewhere else, thus they give minority shareholders normally as such the opportunity of dissenting or leaving the organization as such, right? So when it refers to this kind of situations, these shareholder agreements protect the interest of the shareholder as well as the company. अगर minority या most of the shareholders have agreed कि हम कभी भी project the object of the incorporation को change नहीं करेंगे, then in that case the object is always protected, right? But the thing is कि this is binding on the shareholders, so thus you can say कि if you have agreed to something, you cannot thereafter say no.
कि हम इसके फेवर में वोट नहीं करेंगे, राइट। दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स कि पॉलिसी किस तरीके की चलेगी कंपनी में ऑपरेशन को रोकने के लिए है, राइट। डिविडेंड्स या प्रॉफिट्स शेयरिंग किस तरीके का होगा अगर उसमें चेंजेस करने हैं, तो अगेन शेयर होल्डर्स अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं कि हमें डिविडेंड्स मिलते रहना चाहिए, राइट। तो वो किस तरीके से करे जाएंगे, इफ लेट्स से बोनसेस आर इशूड, बोनस शेयर या एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा जा रहा है, अगर वो शेयर्स इशू हो रहे हैं तो जब वोटिंग होती है नॉर्मली तो इसी तरीके से किया जाता है, सो दैट की द इंटरेस्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन इज प्रोटेक्टेड. Now, moving on to the other two documents, I'll finish it up quite quickly. Now, letter of intent normally is a not as such a contract as such, but rather a declaration. So I'll give you an example. I think उससे ज़्यादा clearly समझ में आएगा. Declaration as such, supposedly अभी हम लोगों ने बात की कि हम एक incorporation बनाना चाहते हैं, एक company बनाना चाहते हैं, तो हमने let's say एक bidding डाली है online और ऑक्शन के थ्रू कि हमको ऑक्शन और फॉर दैट मैटर वी कॉल्ड फॉर द सजेशंस. Now what हमने क्या किया, ऑनलाइन डाला कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरीके के वेंचर में वो अपने सीवीज हमें भेजें, या हम अपनी कंपनी जो कि लेट्स से लैपटॉप्स, कैमरास या माइक्रोफोन्स प्रोवाइड करते हैं, हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो हमको अपने कोटेशंस भेज सकते हैं, राइट. तो अगर हम इस तरीके का कुछ वेंचर शुरू करना चाहते हैं तो व्हाट वी विल डू इज कि वी विल इशू लेटर ऑफ इंटेंट. कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हमने सीधे उनके साथ में, रादर व्हाट वील डू इज वील इशू अ लेटर ऑफ इंटेंट प्रोवाइडिंग द आउटलाइंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर माय बिजनेस, राइट. वंस आई हैव एस्टैब्लिश्ड कि मेरे बिजनेस में स्पेसिफिकली ये टर्म्स होनी चाहिए, then only we will move ahead and enter into a contract. So it is basically intent शब्द जो यूज किया जाता है, जो क्रिमिनल लॉ या लॉ में नॉर्मली शो करता है कि you are showing कि you would move forward towards it, right. Now these letter outlines what are the chief terms with which the business transaction should be done. It also creates कि the next party has to have certain prerequisite conditions. Supposedly मैं अगर यूट्यूब चैनल ही ओन कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि आपके पास एक ऑलरेडी ऑफिस होना चाहिए जहां पे वी कैन कम एंड नेगोशिएट, और यू शुड हैव अ स्टूडियो एज सच वेयर इन आई कैन गो एंड सिट एंड टेक लेक्चर, राइट. तो ये एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है. वंस आई हैव मेंशन्ड दैट, इट प्रोवाइड्स कि माय इंटेंट इज टू वर्क with this regard. Now this particular letter of intent can lead to formation of a contract or agreement later, but it is not binding on the party until and unless it is very specifically stated कि अगर आप letter of intent के साथ ये issue करते हो कि आप ये सारे criterions अगर पूरा कर दे तो आप कुछ normally government contracts के साथ होता है कि once they have issued public notices, they see कि bids कौन से आए हैं और एक particular bid को financial and technical bid को वो choose करते हैं, फिर उन्हें लेटर ऑफ इंटेंट इशू करते हैं कि आप नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे. सपोजली कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करना है तो आपको गारंटी किस बैंक से लगेगी या क्या क्या रिक्वायरमेंट है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड फॉर द रोड एंड वॉट एवर क्राइटेरियंस दैट आर रिक्वायर्ड, वो लेटर ऑफ इंटेंट के साथ इशू होते हैं. कई बार गारंटी के लिए कुछ अमाउंट भी सबमिट करना होता है तो वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में सबमिट किया जाएगा, तभी वी विल thereafter move ahead and enter into a contract. Thus it does not become as such binding as that of कि दोनों पार्टी ने साथ में contract कर लिया हो. Moving on to non-disclosure agreements, these are again legally binding parts in the contract. It can also be an individual contract, it can be a clause under a contract, right. किसी agreement का clause भी हो सकता है. Now this particular non-disclosure agreement is basically कि किसी भी तरीके की confidential information कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी के अलावा किसी और को नहीं दी जाएगी. इन केस ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट भी कॉन्फिडेंशियल क्लॉज इंक्लूड किया जा सकता है कि हम अब इफ लेट्स से गवर्नमेंट ने किसी एक बिड को चूज करके उसे लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया है तो जो जो चीजें उन्होंने प्रिस्क्राइब करी होंगी लेटर ऑफ इंटेंट को, उसको वो बोलेंगे नॉन डिस्क्लोजर में जाएगा कि किसी दूसरी बिड को इसकी पहले से पता नहीं लगना चाहिए, राइट. नॉर्मली नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उधर के सीक्रेट्स या वहाँ की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे. देन अगर जॉइंट वेंचर है
तो जॉइंट वेंचर में दोनों कंपनीज आपस में कितनी चीजें लिमिटेड शेयर करेंगी, कितनी चीजें शेयर नहीं करेंगी। नेक्स्ट इज अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है या आईपी ट्रांसफर हो रहा है किसी का, कि एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आईपी बता रहा है और द नेक्स्ट कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग एज सच, तो वो आईपी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा। नॉर्मली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, राइट? So these NDA acknowledges that there is a confidential relationship between both of the parties. कोई ऐसा information है confidential है और वो पार्टी कभी भी किसी दूसरी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। नए इसके साथ में नॉर्मली पनिशमेंट क्लॉजेस रहते हैं कि इन केस आपने डिस्क्लोजर किया है और if you disclose later there would be either a pecuniary specifically जो बोलते हैं you can have damages that can be issued, that can be liquidated कि already prescribed हैं contract में कि अगर आपने information कहीं दी तो हम इतना amount आपसे charge करेंगे, और it can be unliquidated कि court finally seeing on to the matter करेगा, right? Now before ending I'll just briefly mention 2-3 things, that is कि these were the ones specifically mentioned in the title, so thus I have specifically included that. In addition to this post incorporation documents बहुत सारे होते हैं, वो हम किसी एक ही चीज के लिए नहीं रख सकते। इट कैन बी सर्विस एग्रीमेंट, इट कैन बी शेयर इंटेंट के साथ में, जैसे हम शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट रहता है, इशू करने के लिए भी एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट होते हैं कि हु वुड बी इशूड दिस शेयर टू। देन यू हैव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या आईपी के लिए यू हैव द कंपनी व्हिच कैन सी merger acquisitions, then there are compromise as such जो कि company compromises और credit settlements which are done जो कि company के again contracts होते हैं जिसमें वो अपने creditors के साथ में negotiate करता है। then you have acquisitions, किसी दूसरी company को acquire कर रहे हैं, या you have merged into another company are also again part of post incorporation agreements. With that I would sum up the discussion, primarily focusing on 3 types, that is pre incorporation, incorporation and post incorporation agreements and documents, which are the ones जिससे कि हम बैकबोन मानते हैं किसी कंपनी का, और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपनी को रिकॉग्निशन देते हैं, क्रिएटिंग अ लीगल एंटिटी। Before it was a legal entity, whether it would be bound or not, after it has become a legal entity it becomes binding कि कौन सी चीजें कंपनी से बाइंड होंगी। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट आर बाउंडिंग ओनली ऑन शेयर होल्डर्स, लेटर ऑफ इंटेंट, NDAs, अदर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर ड्राफ्टेड लेटर कंपनी के लिए बाइंडिंग होंगे। तो नाउ इट कैन बी sued as an individual and it can also sue another person, sue as in they can go to the court for enforcement of these contracts. I think with that I would conclude the lecture. I've left very less amount of time, I'm really sorry, but if there are any questions or observations. Thank you so much, Ridhima ma'am. I hope this activity gave a very much understanding of the contracts and contract management to the viewers. As we are coming to the close of the session, I'll just take 1 to 2 questions. I have one question with the viewer कि contract management को कैसे improve कर सकते हैं? Ridhima ma'am, can you hear me? Hello, Ridhima ma'am, can you hear me? Hello, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, I think Ridhima ma'am is not able to hear me. Ridhima ma'am, am I audible? Okay, I guess कुछ connectivity का issue है. So we'll end our session here. Ridhima ma'am ने काफी कुछ clear किया आज के session में. उन्होंने हर तरह के प्री बताया उन्होंने कि किस टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं इनकॉर्पोरेशन के टाइम, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेट करते टाइम किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हमें करने चाहिए। सो थैंक यू सो मच आकाश, एंड बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी रिधिमा मैम को भी और हमारे व्यूअर्स को भी जिन्होंने आज
पूरा सेशन ध्यान से सुना और पिछले 7 दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम जो भी है हमारे क्विज की लिंक वो सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालेंगे। So till we meet next tomorrow, you all take good care of yourself and keep learning. Thank you so much. Namaste. Thank you, man. Bye.